One more area which we always look forward to because the entire world is interconnected. अभी जैसे हम देख रहे हैं आज क्या चल रहा है यूएस में, तो यूएस का इम्पैक्ट हमारे ऊपर खाली नहीं पूरी दुनिया के ऊपर है, क्या चाइना कर रही है. So everybody is interconnected. So you need to have global mindset. Really kind of learnability point of view, we say learner. And in today's tech-driven era, entirely we're talking about the world of AI, ML and spectrum of IoTs of the world. So definitely that being an agile learner, that boss मुझे नहीं पता है तो मैं सीखना चाहिए. See from the long-term point of view, that one job is not going to make your career. As we look at life as a marathon. All right, hi everyone, welcome on board. Today I'm in Wellinkar Business School with the Group Director of Wellinkar, Dr. Udit Salunke. Sir, welcome on board, sir. Hi. Sir, it's pleasure and honor to meet you. I've been hearing a lot of good stuff about you, your stories, and past nearly 35 years you've been in the academy and corporate as well. Today I'm 40 years. 40 years now. Wow, this is so amazing. Today I'm going to ask sir tough questions to sir, and we're going to have fun. Sir, पहली बात, right now the interviews are going on. People are going through all this mess. What kind of things you look into a student when he's sitting across the panel? जब आप इंटरव्यू ले रहे हैं या आपके रवि सर या आपके colleagues इंटरव्यूज ले रहे हैं, रचना मैम, what are the things they would look into? See, first of all, when we look at the students, so we look at communication as one of the first aspect. And the communication is particularly not only verbal and written communication, but how far you have good listening skills. Maybe in future point of view also, some of these aspects are important. We look at leadership. And leadership, when we say, leadership में ऐसे नहीं कि typically you are very good at writing down maybe nice thesis or nice answer sheets, but have you demonstrated? आपने कभी जिंदगी में दिखाया leadership skill क्या होती है? कॉलेज में हो, maybe social sector में हो, कोई project में हो, company में हो, तो leadership definitely. See, जैसे आपको पता है कि innovation is the name of the game in the marketplace. If you are innovative, definitely you can make so much of difference, be it companies, be it even NGOs, be it even government. So are you innovative from that point of view? One more area which we always look forward to because the entire world is interconnected. अभी जैसे हम देख रहे हैं आज क्या चल रहा है यूएस में, तो यूएस का इम्पैक्ट हमारे ऊपर खाली नहीं पूरी दुनिया के ऊपर है, क्या चाइना कर रही है. सो एवरीबडी इज इंटरकनेक्टेड, सो यू नीड टू हैव ग्लोबल माइंडसेट. एंड लाइकवाइज ऑन मेनी ओकेजन्स प्रोबब्ली वी आल्सो आर वेरी कॉन्शियस कि आप खाली अपने लिए जिंदगी जी रहे हैं इन अ सेल्फिश मोड, और यू आर आल्सो ट्राइंग टू कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी, टू द नेशन, टू द ग्लोब. जैसे हम आजकल बात कर रहे हैं कि काफी गर्मी हो रही है, काफी जल्दी गर्मी बढ़ गई है, क्लाइमेट पॉइंट ऑफ व्यू, सस्टेनेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू, जो भी सोसाइटल एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू. सो योर रोल इन दिस मे बी सोसाइटल पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल, दैट वन एस्पेक्ट. एंड आल्सो पैरेलली हाउ फॉर क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग काइंड ऑफ क्वालिटीज व्हिच यू ट्राई टू एग्जिबिट. वो सर रिज्यूमे पे होता है कि when you meet somebody, okay, leave the interview part, you meet a student, she or he is like a 20-year-old typical person who wants to go to an IIM or an SPJN or a Wellinkar Business School or an RC Munji Bombay. क्या देख के आपको लगता है ये लड़का बहुत शाइन करेगा आगे जाके? I think we should give him a Wellinkar t-shirt or a hoodie. वो क्या skills होती हैं? That is see एक उभर के जो आता है ना कि you kind of जो बच्चा ऐसे maybe gentleman or lady whenever they come on the panel and they need not to really take a pause and think too much, but it comes from within. और एक कॉन्फिडेंस जो आता है, जिन्होंने भी थोड़ा हैंड्स ऑन काम किया होता है, when the students did something hands on project, and in today's era of chat GPT, probably people know how to cut paste everything very easily. But जो दिल से आता है, जब भी दिल से बात करते हैं, तभी you get a kind of sense from that student. Yeah, I think he has a spark in his eyes. Great. So communication, spark, etc. And sir, once he's there, you've trained so many, like thousands of students of Wellinkar right now in the market, your alumni. Who are the ones who actually kill it in life? काफी लोग बड़े आदमी बन चुके हैं. Your MD of I think JP Morgan again. He's also your student. So what are the skills you saw when they were younger or when they grew up? Was it learnability? क्या adaptability? What is it? See, first of all, definitely one thing is that you need to be really kind of learnability point of view. We say learner, and in today's
tech-driven era. Entirely, we're talking about the world of AI, ML, and spectrum of IoTs of the world. So definitely, that being an agile learner, that boss, मुझे नहीं पता है तो मैं सीखना चाहिए, and maybe even in related areas or unrelated areas as well. So that learnability is very, very important. The second area which is there, at least I believe that we talk about, it's like a perpetual optimism is a force multiplier. So but you need to be optimistic. See, if you see today's newspaper, yesterday's newspaper, the way in which headlines, be it Economic Times, Times of India, any regional newspapers, anybody who's with the very faint heart, he'll have an attack. बिल्कुल हो नहीं आने के लिए, you should assume this is part of the game. Let me be in the game and play the game. And even though if I go through ups and downs, see, जिंदगी में ups and downs तो होने ही है. Nobody has been guaranteed to succeed all the time. So be ready for going through ups and downs. Be ready that as a kind of life learning. See, that life learning is important. And some of the students, alumni which I have seen, and not necessarily only of Wellinger, but I have seen many alumni of IIMS or Bajaj, SPJN also. Yeah. See, many of those students have definitely been kind of bit humble. And in the long term, being humble with the humility makes so much of difference. And unnecessarily making too much of loud noise when it is not called for. And while going through this and learning from each other, see, the team जब भी हम बात करते हैं, right? When we talk about, it's really kind of we philosophy one should believe in. तो we में क्या होता है कि you learn from heterogeneous people. अलग अलग तरीके के लोग होते हैं ना, जैसे अपनी उंगली एक सर के नहीं होती, ऐसे ही अलग अलग तरह के लोग होंगे, तो उनसे सीखना चाहिए. Sometimes you may come across somebody who's exactly opposable mind. बट अपोजिबल माइंड से क्यों नहीं सीखना चाहिए? हम लोग पक्का सीखना चाहिए. ये जब अपना एटीट्यूड जो है, ये जो अपना थॉट प्रोसेस जो है, अगर हमने थोड़ा सा ग्राउंडेड रखा, सीखने के लिए रखा, लाइक अ लर्नर, आई एम श्योर इट मेक्स लॉट ऑफ डिफरेंस. एंड देन दैट रिफ्लेक्शन करते रहो ना, इवन दो यू आर डूइंग गुड और वेदर यू आर डूइंग बैड एज वेल, समटाइम्स डू रिफ्लेक्शन, टेक अ पॉज, and I'm more than confident all those kind of students, you need not to come from the great pedigree of the institution, but you have certain basic qualities. And I'm sure you will shine in the long term. That's awesome. That's awesome. तो student आ गया, corporate में long term shine कर रहा है. So when you coach students, maybe in an MDP program, or when you meet them, corporations, leaders, etc., are they also humble? ये बड़े-बड़े लोग आते रहते हैं यहाँ पे, आप भी मिलते रहते हैं. All these industry veterans. Very, very genuine feedback is sometimes even those people at an early stage of their life, they may not be very humble. Yeah. But they also learn the tricks of the trade gradually. But once if you cross that threshold, मेरे हिसाब से करीबन एक 35-40 के बाद में, when they reach to a decent position, they also understand that no boss, I think I should kind of be grounded, listen to the people. Yeah. But initially, शायद you go through the graph and then you go through the graph, bit of ups and downs, but you learn. So I think, at least I have seen somebody who's Dean of Harvard, someone who's heading for ICICI Bank, or maybe Mahindra's top team, or Birla's top team, Godrej. So when we look at them, yeah, definitely, maybe probably you'll really find over a period of time people picks up, and that's a great sense of I'll say those qualities. That's amazing. That's amazing. Great, sir. How do you think business schools are changing? I'm going to ask you a tough question. So B schools are being labeled as placement agencies. ठीक है, मैं इतना दे रहा हूँ, ROI हम लोग भी क्लेम करते हैं, आप भी क्लेम करते हो कि B स्कूल का ROI बहुत बढ़िया है. एडमिशन टीम के पोस्टर्स भी देखते हैं, वो पीछे खड़े हैं कि ROI हमारा बहुत बढ़िया है. एंड आई पर्सनली फील वी आर फीडिंग स्टूडेंट्स माइंड कि हमारा ROI अच्छा है. ROI मीन्स पैसा दिया, प्लेसमेंट दिया. And placement scenarios are changing right now. All my friends, I'm from SPJN, 2009 batch, has been nearly 15 years now. And all of my friends are either CXOs or CXO -1 in all the corporations. And सबने बोल दिया है कि ChatGPT use करो और Gemini use करो or build your own AI and use those machine learning algorithms and try to reduce the workforce by 25%. ठीक है, मतलब 3/4, एक बंदा तो जाएगा 4 में से, राइट? 100 में से 25 लोग जाने हैं. एंड हियर स्टूडेंट्स आर नॉट गेटिंग प्लेस्ड. आई एम नॉट सेइंग एट Wellinger, इन ऑल अक्रॉस द बॉटम 10% स्टूडेंट्स आर स्ट्रगलिंग इन द प्लेसमेंट्स. व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? वी आर क्लेमिंग कि हमारा ROI अच्छा है,
IIMs are also saying हमारा IIM तुम्हारा career बनाएंगे, but it's the story is not matching up. What's your take on that? See, at the first place, as a student, if I'm looking at even today's situation, that one should really look at business schools, any business school, not as a employment exchange. See, from the long-term point of view, that one job is not going to make your career. As we look at life as a marathon, right? It's not a sprint. कि मैं 100 मीटर मुझे भागना है, ऐसे हो ही नहीं सकता है. तो आज के तारीख में, if your way of thinking, if your lenses are such, wherein I'm going to learn, and in that learning curve, I'm not only going to absorb the conceptual thought process, but I'm going to apply that as much as possible and very genuinely. ऐसे खाली 2 लेक्चर है करके मैं जाके 2 लेक्चर के लिए बैठूं, बाद में हम लोग टाइम पास करने के लिए निकल जाए, उसके बजाय अगर आपने ये सोचा 2 साल के लिए कि मुझे डेली 16-18 घंटा काम करना है, अगर मेरी नींद 4 घंटा 3 घंटा भी होए तो भी चलेगा 2 साल के लिए, एंड इफ यू ट्राई टू बी वेरी कमिटेड, believe me, you can make your life, whichever business school you pass out, whichever business school I'm saying. I've seen many students in my 30 years in management education, 10 years in the corporate as well. I've seen umpty number of good students. कोई भी लेवल हो आपका, किधर से भी पास आउट हो, but you will really shine over a period of time. But आपका एटीट्यूड ये होना चाहिए. जैसे मैंने 9 साल की नौकरी करने के बाद में मेरा MBA किया. I did my masters after 9 years of working. Wow. So because after 9 years of working, so I was so serious about it. I was not ready to give away even 1 minute. I was really looking for to learn. So अगर आप उस एटीट्यूड से अगर आप काम करते हो, तो एक जॉब तो किधर ना किधर तो मिल ही जाएगा, बट आपको खाली एक जॉब लेके रुकना नहीं है ना. See, you have to look at that summit, maybe 10 years, 20 years, 30 years down the line. To achieve that summit, you should be mentally prepared. In this 2 years of MBA, जॉब आराम से मिलेगा, किधर ना किधर तो मिले, आज नहीं तो कल मिलेगा, डिले होके भी मिलेगा. But developing that resilience, developing certain set of basic qualities, which is must and which are non-negotiable. Anybody will hire you if you really keep that attitude. Excellent. If you're good, you'll be picked up, right? That's 100%. for sure. That's for sure. Great, sir. Great. What's your take on Gen Zs? So, at present, looking at industry overall, B-school industry, let's call it. Do you think, sir, we creating value to the students right now by spending 2 years? See, in my opinion, this 2 years, definitely we create value, and many of them are freshers also. You don't get all students who are with the WorkX. Yeah. That model, maybe today, post-COVID, that has changed as well. So when you don't have a WorkX, so definitely in 2 years, we can create value. Provided you give them enough of exposure and interventions for the projects in the marketplace. Not only sitting in the library, but go to the market. See, classroom is marketplace. Classroom is not mere 4 walls in the campus. Classroom is a nature. Classroom is a public library. So you go out, see, understanding the latent insights of the customer. Customer के mind में क्या है, market का requirement क्या है, इधर campus में बैठ के नहीं होगा. Campus में अपना रोल है, अलग रोल है. So you should do that. और काफी जैसे हम बोलते हैं कि we should believe in more of the job creators, not job seekers. उसका काफी इंपॉर्टेंस और बढ़ने वाला है. Luckily ओवरऑल इंडिया में ये जो थॉट प्रोसेस है, स्टार्टअप इकोनॉमी है, एंटरप्रेन्योर इकोनॉमी है, दैट हैज पिक्ड अप एक्सट्रीमली वेल. सर वो वेरी कैंडिडली MBA से तो स्टार्टअप ज्यादा मुझे एक्सपेक्टेशन है नहीं, बिकॉज सिंस वी टॉक अबाउट इंडस्ट्री, IIMs की फीस हो गई 25 लाख. ठीक है सर, सब कुछ खर्चा मिला के 30 लाख रुपए, बिकॉज खाना पीना भी खाना उसको दे रहा है वो IIM अहमदाबाद वाला. और वो जब ग्रेजुएट होगा, ही इज गोइंग टू बिकम 23 ईयर ओल्ड. बेचारे को 30 लाख रुपए वापस देने में 2.5 साल रुपए दिखते एज पर द FT रिपोर्ट. वो हो गया 25 साल का. और इंडियन 25 साल का जब लड़का होता है ना, तो उसको उम्र दिखनी शुरू हो जाती है, बिकॉज फैमिली वांट्स टू गेट मैरिड एंड ब्ला ब्ला ब्ला, एंड यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. एब्सोल्युटली. So, and this question I asked to 9 of the IIM directors. We were having a directors at the conference, and I was talking about this also. And since all the IIMs are now self-funded, Government of India has cut their budget by like 50% more. I don't know why. So ये burden तो बच्चे पे ही जाने वाला है. तो मुझे धंधा तो expected job creation IIM से नहीं, और expectation करना भी गलत होगा. Because after 25-26, you can do, of course. ऐसा नहीं बोल रहा. Most of the startup guys, Nykaa की CEO ma'am is 55-year-old. Of course, they can start it later in life. I started
but it took me bloody 5 years to get out of GE to match my salary of entrepreneurship and quit it. So I had to do double dating, and then I quit. But do you think there'll be some risk takers? See, I'll tell you, मैं अभी जो भी 25-30 साल से देख रहा हूँ ना बिजनेस स्कूल में, पहले के जमाने में जो भी अप्लाई करते हैं उसमें से कितने बच्चे लोग और स्टूडेंट्स के स्टार्टअप होते थे. टुडे आई कैन टेल यू डेफिनेटली इन 100 में यू विल फाइंड एटलीस्ट 4 or 5 स्टूडेंट्स हु आर हैविंग देयर ओन स्टार्टअप्स. वो पहले नहीं था कभी. True. एंड टुडे ओवरऑल टेक इकोसिस्टम हैज इवॉल्वड इन इंडिया में. आधार से लेके एंटायर फाइनेंशियल सिस्टम इज इवॉल्वड. Very true. उसके वजह से स्टूडेंट्स आर इन द पोजीशन टू मोनेटाइज विद रिस्पेक्ट टू देयर आइडियाज एंड देयर. I at least took many interviews even this time our selection process. I could see phenomenal kind of thought process which students has and they already running their startups. Yeah. एक तो एक एग्जांपल मैं आपको जस्ट बताना चाहता हूँ. एक बच्चे का 5-6 साल का एक तजुर्बा था स्टार्टअप का. तो हमने बोला भाई अगर आपको एडमिशन मिलता है वेलिंकर में तो आप कैसे करेंगे, आपका स्टार्टअप आपको बंद करना पड़ेगा. बोलता है नहीं, आई ऑलरेडी अपॉइंटेड माय फादर एज द CEO ऑफ माय कंपनी. Look at the smartness of the today generation. We are सिलेक्शन हो गया सर लड़का. so Gen Z को हम ब्लेम करते हैं, बट ऐसे कितने बच्चे हैं, अच्छे बच्चे हैं. तो ये जो बच्चे आते हैं ना, हम लोग क्या करते हैं ना, इनिशियल फाउंडेशन प्रोग्राम में वो पूछते हैं हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू गो हेड विद स्टार्टअप एंड यू विल फाइंड इन द बिगर बैच विल मे फाइंड 80-100 काइंड ऑफ स्टूडेंट्स. बाद में हम ऐसे ही लाइटली उनको बोल देते हैं हमारे प्लेसमेंट सेल को बुला के कि भाई ये सब स्टार्टअप वाले हैं ना, उनका प्लेसमेंट अभी बंद कर दो, प्लेसमेंट नहीं करने वाले हैं. एंड यू विल फाइंड बाद में वो थोड़ा उनका फ्लाइट जमीन पे आ जाता है. बोलता नहीं सर प्लेसमेंट भी चाहिए. बट उसमें से उस 70-80 में से यू विल फाइंड एटलीस्ट 20-25 ऑड आर रेडी टू फॉरगो द प्लेसमेंट. Wow. They don't mind giving a placement. I have example of one of the student while working on, in fact she did kind of one of the project for the soil testing machine in Nasik along with the TCS disk, our own student. She took a gap of 1 year while pursuing even her MBA. So that shows that to girl student. Their parents also met me and we are encouraged. So likewise, there are always percentage-wise what you're saying is true. Because many students come to business school for good salaries, good packages. But today, अगर मार्केट में इतना मेल्टडाउन है, जैसे आप हम देख ही रहे ना आज के तारीख में क्या हो रहा है, तो उसमें मार्केट से अच्छी सैलरीज एक्सपेक्ट करना बराबर नहीं होगा ना. बिकॉज कंपनीज आर ट्रेडिंग विद वेरी कॉशियस ऑप्टिमिज्म, कॉशियसली. तो उसमें अच्छा बेट क्या है? थिंक ऑफ योर ओन वेंचर, नथिंग रॉन्ग इन दैट. उसमें यूनिकॉर्न भी कितने बढ़ गए, 4-5 से लेके we close in fact we cross century. So you will really find those guys are there, those students are there, but that percentage may be 3-4%, max 5%. वो बढ़ेगा. But at our level, in any of the business schools, we should have some kind of startup accelerator kind of period. Yeah. And learn from what others are doing. Like we learned from MIT University. True. How they structurally they try to nurture the startups and entrepreneurial ecosystem. And which makes sense. Let's give a try for this nation at least. That's so amazing. Great, sir. I'm really having fun, but I know you're a busy guy. Any parting thoughts for all our 20-21-year-old listening to us? They also want to get inspired. Many of them going to be joining IIMs. कोई अहमदाबाद जाएगा, कोई SPGN बॉम्बे जाएगा, नारसी मुंजी, कोई आपके साथ पढ़ रहा होगा शायद बी स्कूल के अंदर. Any parting thoughts to all my listeners? Keep faith in yourself and give your level best. Success is yours. पक्का सर? पक्का. और boys and girls, with this faith, do it in the like button for sure. मुझे कमेंट करके बताइए what do you guys think about the podcast? What was one big learning which you guys have learned? And I'll see you in the comment section. Thank you so much, sir. Appreciate Thank you very much. Thank you so much. Appreciate. Thank you, sir. Have a good day.